Hi all, I am Adarsh Pandey, CMAT 2021 All India Rank 23, and in this video we'll be covering the innovation and entrepreneurship section, which is very new to CMAT, and as a result of which it seems as a difficult section. So we'll understand how we should approach the section and what are the syllabus we should learn so that we can get a better result. So moving ahead. So first thing to understand is कि it is a mid to low accuracy section. Don't expect a great or higher accuracy in this section. As compared to GK, ये थोड़ा easy होगा, but as compared to other section, this is a little bit challenging. So what you need to cover is the basic concept of MBA, that is concept from finance, marketing, HR, operation. Just उसका ऊपर ऊपर का part. You don't have to go into the depth. Just उसका जो basic concept है, you should be knowing that, and the current business scenario in the world. So if you are thorough with the basic concept and the current business scenario, so it is easily manageable section and you can score better marks in this section. So I would suggest कि prepare it along with GK. ये section काफी similar है as compared to GK, and also I'll suggest कि इसको just immediately after GK solve करो and don't treat it as a different section altogether. ये section almost GK ही है, but the thing is कि इसका area काफी limited है. जहाँ पे जीके में यू हैव वास्ट ओशन टू कवर, यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो सेगमेंट है, दैट इज बेसिक एमबीए कॉन्सेप्ट एंड करंट बिजनेस. सो अगर आप ये दोनों चीजें कवर कर रहे हो, सो यू आर गुड टू गो. ऑल्सो आई सजेस्ट कि सॉल्व इट इमीडिएटली आफ्टर जीके, बिकॉज जीके में योर ब्रेन इज कलेक्टिंग समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी लर्न, एंड द सिमिलर प्रोसेस इज बीन फॉलोड इन दिस सेक्शन एज वेल. तो आप एक ही फ्लो में ये दोनों को खत्म कर सकते हो इन द फर्स्ट गो, एटलीस्ट इन द फर्स्ट राउंड, so that you can have a better outcome of the result. Also, you should give at least 15 minutes initially, as I also mentioned for GK. Dedicate some time to this section because this section and GK is known as game changer. पहले खाली GK हुआ करता था, but this is also included in that. And please go at least 2 to 3 layers deep. Just ऐसा नहीं कि जो आपको सामने मिल रहा है उसको पढ़ लिया. If you are learning anything about layoffs, so 2-3 लेयर अंदर जाओ. कौन सी कंपनी ले ऑफ कर रही है, कितना कर रही है, उसके ब्रांड के लोगोस क्या हैं, उसके की पीपल क्या हैं, all those kind of stuff, so that even if they are moving in that layer, so you are able to answer those questions. Talking about the syllabus, so this is a short and simple syllabus. Just take the screenshot of it and try to cover most of it, because अभी भी ये limited नहीं है. We can have more topics coming in, but this is manageable and you can complete this in the short amount of time. So just take the screenshot of it and start preparing on these lines. Also, the strategy that I'll suggest is keep your mind focused towards 80 to 85% accuracy. अगर उससे ज़्यादा जा रहा है, so well and good. And if you are solving it just after GK, so जो GK के rules हैं वही applicable रखो. ज़्यादा इसमें expect मत करो कि you will be scoring 80 marks. ऐसा नहीं होने वाला. It is a section which is challenging, और ये माइंड में लेके चलो कि आपके लिए चैलेंजिंग है तो बाकी सबके लिए भी चैलेंजिंग है. There is nothing to worry about. Just the thing is, if you have prepared well, आप प्रिपेयर नहीं किए हो तो सिर्फ आपके लिए चैलेंजिंग होगा, राइट. एंड अगेन सॉल्व इट इन 2 राउंड एटलीस्ट. 3 राउंड में जा रहे हैं, स्टिल गुड, नो इश्यू अबाउट दैट. एंड अगेन यू हैव टू एलिमिनेट ऑप्शन. यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग भी आएंगे, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ब्रांड के लोगो होंगे या फिर ब्रांड का नाम होगा एंड उनके टैगलाइन होंगे. सो यू नीड टू मैच accordingly. So if you are eliminating options, so आपके वहाँ पे chances of getting right answer would increase. So elimination of option पे practice करना start कर दो, specifically for GK and innovation section. Reading question multiple times will help you a lot. At least इसने मुझे तो help किया है. And if you are reading it multiple times, so the chances of eliminating few of the option will increase, or as a result of which your probability of getting right answer will also increase. So आप थोड़ा सा टाइम दो इस सेक्शन को भी और ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड ऑप्शन. अगर आपके माइंड में किधर कंफ्यूजन है, सो हो सकता है कि यू विल गेट द राइट आंसर. सो ऑल्सो आई सजेस्ट कि एम फॉर एटलीस्ट 60 मार्क्स.
60 के लमसम कुछ भी आ रहा है तो चलेगा, बट बिलो 60 अगर ज्यादा जा रहा है सो इट विल बी अ कंसर्न. Alright, so with this we have concluded. If you have any doubt, any question in any section or in CMET altogether, feel free to post those in comment section below. I'll be more than happy to answer you all. Till then, prepare well and have a good day.